Hello friends, welcome to my channel called IVDR Manufacturing. So today we are going to discuss on the same topic which is called as a Directive 9879 EC EU IVDD. As you must be knowing my friends, we have already discussed upon the total 5 articles in my previous lecture which I am going to share the link in my descriptions. So दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने नेटवर्क में, क्योंकि आप जैसा आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में अभी भी मेरे काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया बट दे आर वाचिंग माय वीडियो व्हिच शोज दैट दे आर लाइकिंग माय वीडियो एंड दे आर गेटिंग द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। बट आपके सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा बट इससे मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा और इससे मुझे फर्क पड़ता है। सो प्लीज I request all of you, it's a humble request, please do subscribe my channel because it takes time दोस्तों, मुझे एफर्ट लगाने होते हैं आपके लिए एक लेक्चर लाने के लिए। I hope this will won't suffix you into any kind of constraint. So let's begin with today's lecture. Article number 6. Article number 6 mainly speaks about the formation of the committee for the standard and for the technical regulation. So, क्या होता है, कोई भी जो रेगुलेशंस होते हैं अगर उसको हमें इंश्योर करना है कि रेगुलेशन फॉलो हो तो एक कमेटी बैठानी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो दिस डायरेक्टिव 9879 EC दे आल्सो इंश्योर कि कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट हो, रेफरिंग द आर्टिकल नंबर 5 व्हिच वाज फॉर द लिस्ट ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड, राइट। देन कम्स द आर्टिकल नंबर 7. सो व्हाट हैपेंस इन द आर्टिकल 7, दिस कमिटी needs to be governed or needs to get assisted by a committee set by the article 6/2 as per the directive 9385 EC, right? Then comes the article number 8 which is a safeguard clause. So what happens, as the name speaks about, a safeguard clause means there is a provision or a clause which ensure that the customers who are going to use this product, they will be not going to get harm in terms of any injury, in terms of wrong diagnosis. So they should be safe from any misuse, right? So what happens in this article number 8, the member states they ascertain whether the devices are been working as per their intended use without compromising the health and safety of patient, user and wherever applicable, right? If it is the case, then the devices shall be quickly straight away withdrawn from the market without taking any compromise. Now to a 6 on your side recall alert. Some at-home COVID-19 test kits are being recalled over an increased number of false positive test results. Specifically, some, not all, Ellume tests are impacted. We've got a link to a list of specific lot numbers that are impacted on WATE.com. Apparently, the increased number of false positives goes back to a supply chain issue with one of the pieces in the self-test kit. Ellume said Food and Drug Administration is recalling an at-home COVID-19 test because it was illegally imported. The FDA says these standard Q COVID-19 ag home test kits from SD Biosensor Incorporated were not cleared, authorized, or approved. In addition to the voluntary recall, the company says it is conducting an investigation to determine how the tests ended up in the U.S. If you have this test kit, the FDA recommends throwing it away and retesting with an FDA authorized or cleared test. We speak on Article 6, we talked about Article 7, we talked about Article 8. Then comes the Article number 9 which is Conformity Assessment Procedure. आपको सबको पता होगा फ्रेंड्स कि कंफर्मिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। कंफर्मिटी वर्ड मतलब कि आप किसी कंप्लायंस को कंफर्म कर रहे हो, आप इंश्योर कर रहे हो कि आप उसको फॉलो कर रहे हो किसी भी गाइडलाइन को। तो क्या होता है इस डायरेक्टिव 79 EC में, जो भी डिवाइसेस जो एज पर annex 2 जो कवर हो रहे हैं, राइट, दे नीड टू हैव द परफॉर्मेंस एवल्यूएशन इन प्लेस keeping in mind the CE marking ka affix on their kit boxes, and they need to draw the EC declaration of conformity before placing the devices into the market. So this is called as a conformity assessment procedure. So
आप सबको पता है कि अगर मैं अपना मार्केट में अगर डिवाइस प्लेस करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने कंपनी को उस मार्केट में रजिस्टर्ड करना होगा. सो दिस आर्टिकल 10 स्पीक्स अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड द डिवाइसेस. सबसे पहले कंपनी को, आई मीन मैन्युफैक्चरर को पहले रजिस्ट्रेशन करना है. देन when this company get registered, they need to register their product as well. So I hope you got the idea as to what this article 10 speaks about. I'm not going to talk about anything in detail. Let's say कि आपका मेडिकल डिवाइस मार्केट में प्लेस हो गया है. प्लेसिंग होने के बाद आपको सबको पता है there is a procedure called as a PMS, post market surveillance, right? Which is also termed as like a vigilance procedure. So what happens, there is a feedback mechanism which took place once your product has been placed into the market by any vigilant authority. What they will do, they will ensure whether the manufacturer are supplying the right information as per the labeling context. Are they giving the right product, keeping in mind the safety aspect without compromising the intended use. Then they will see whether there is an adverse event into the market. So this is called a vigilance procedure, the basic procedure. Similarly as to what we do in the Indian CDC MDR 2017. Then comes the article number 12, which is the European Data Bank. So कोई भी जो manufacturer है, they first need to get themselves registered. So जो भी जो data है, ये यूरोपियन डेटा बैंक के अंदर कवर होते हैं, जो फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं. तो व्हाट हैपेंस, दिस यूरोपियन डेटा बैंक इज मेनली एक्सेसिबल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कैरी आउट द टास्क रिलेटेड टू द डायरेक्टिव ऑन डेली बेसिस. अभी क्या ये डेटा कंटेन करेंगे मैन्युफैक्चर रजिस्ट्रेशन पर्पस से, डेटा रिलेटेड टू सर्टिफिकेट, एनी मॉडिफिकेशन. देन अगर कोई विड्रॉ आ रहा है प्रोडक्ट में, उसका डेटा कंटेन करेंगे एज पर एनेक्स 3 and 4. Then comes the article 13. So I hope you must have enjoyed my today lecture. Please, जैसा मैंने आपको सबको बोला कि आप मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे फर्क पड़ता है. Right? Take care. Bye bye.